धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय 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 धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे 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 सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः ॐ Om Sri Sai Ram. We'll start in 5-10 minutes.
In the meantime, I request you all to kindly pay attention to Dr. Hanumantrao Andavolu Garu, who is the founder with Bhagavan's grace of Sarvadharma Center, New Jersey, which will be hosting next year Charm in the United States of America with and Dr. Vani and Dr. Rao are total instruments of Bhagwan in building that place in New Jersey. He can give a 2-day lecture on all the experiences that he had with Bhagwan. Personally, Swami actually drawing the footprint of Sarvadharma Center himself and guiding them all the way through personally himself. That was the grace Swami and attention Swami gave to Sarvadharma Center. And I call it as the East Prashanti Nilayam of United States of America. And I call Sai Seva Sadan the West Prashanti Nilayam of America. In fact, our altar design of Sai Seva Sadan was inspiration from the Sarvadharma Center, from Rao Garu's, no, it's not Rao Garu Sarvadharma Center, from all our Sarvadharma Center. So without further ado, request Rao Garu to say a few words and welcome us to the next year. Thank you. Thank you, Shekhar Garu. Sairam, everyone. Sairam, I hope you all can hear me. Sairam on the right side. Ladies, Sairam, Sairam, everybody. It's a great pleasure to be here with all of you for the second time. My first charm was in 22 in Sacramento, and it was a wonderful experience for me first time, and then that's what made me come here this time as well. And in the meantime, Swami has decided through Shekhar, Brother Shekhar, that there will be a Charm 24 at Sarvadharma. We are so very fortunate to do that, to be hosting you all. We look forward to seeing every one of you. I want to thank the 40 plus contingent from Northeast that has come here, and including about 7 Rithwiks from New Jersey itself. And on behalf of all of them and on behalf of the entire Sai family in Northeast and especially in New Jersey, I welcome you next year in July. I think the dates are in the making, so to speak, but it will be in July, ending again in on the day of Guru Purnima. So I welcome you all again with the help of very, very efficient Srinivas Konchada and several other friends and colleagues of Sarvadharma Service Center. I invite you lovingly to New Jersey. Most of you probably know that Philadelphia is called City of Brotherly Love. I think New Jersey should really be called State of Motherly Love, and that's which we are taking the privilege of inviting you all to be with us in July of 2024. Swami will always be there, as you know, and as Brother Shekhar said, Swami has guided us from day one to the last in Sarvadharma and still is guiding us. I'm not bashful, and so I will tell you that it is only one center in the entire country of United States that Swami approved and saw through it that it was constructed, giving us at every step of the way his instructions. So you will be coming from a beautiful Goshala here, which was blessed again by Swami's grace, to a place which is actually has been constructed by his grace. So kindly come and enjoy, and let's all again get together in July of 2024. Sai Ram. So that's in United States.
And before that, next March, 2024 March, there will be another Atirudra Mahayajnam. It is not Chandi Sahita Atirudra Mahayajnam, it is Atirudra Mahayajnam. It's army that's going to be happening in Durban, South Africa. And it will not be as hot as this for sure. It will be much more pleasant. And where is my brother Satyan? And I'm requesting all the Europeans, because it's proximate to them. It will be very far for most of the United States folks. But however, Swami's grace, we will be conducting that yajna as well. And you all can help and participate. The point is, don't suffer from happiness. Register and do sadhana. That is the whole point of it. Okay? And with that, anybody who needs the Satyanarayana Sai Satyanarayana picture, they're giving it, and then we'll get started in couple minutes here. Sairam, whoever does not have Satyanarayan Swami picture, can you raise your hand? Please raise your hand if you don't have one there. Anybody else? Does everybody have a picture? We are talking about this Swami picture. Yeah, Swami. Talking about this Murti. Sairam, focus please 1 second. Does everybody have Swami? Okay, good.
Om Sri Sai Ram. Okay, if you have a water bottle, I'm sure you have a water bottle. You cannot be hanging around without a water bottle. Instead of creating that sound, put the water bottle and put Swami's picture against that. That's the simplest solution. Okay? And they're supplying the material as quickly as possible. Just give us a couple minutes. And Brian is going. Where is Brian? Brian is here. రమారమణ గోవింద గోవింద ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాన్ ధ్రువం పర్వతైవావితాతలి ఇంద్రైవేహ ధ్రువస్తిష్ఠ యః రాష్ట్రముదారయ అవితిష్ట ప్రతన్యతః అదరే సంతు శత్రవః ఇంద్రైవ వృత్రః తిష్ఠ దేవీం వాచమజనయంత దేవాః తాం విశ్వరూపా పశవో వదంతి सा नो मन्द्रे समूर्जन्तुहान धेनुर्वागस्मानुपदुष्टुतैतु आरम्भकालमुहूर्तशुभमुहूर्तोऽस्तित्यन गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु आचम्या केशवाय स्वाहा सर्वे अंदरो आचमन केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षतां कुर्वे घण्टारवन्तत्रा देवता पानुलाञ्चनौ इति घण्टानादं कृत्वा अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुंस्ताः ये भूता विघ्नकर्तारः तेन शन्तिवाग्न्या अवक्रामभूताद्याः सर्वे ते भूमिवारकाः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत् पृथ्वीत्वयार्ता लोका देवी त्वं विष्णुनार्ता त्वञ्चदारे मां देवी पवित्रं कुरुशासनं प्रणवस्या परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओं भूः అందరూ చెప్పండి మమౌపార్త సమస్త దురిత క్షయద్వార శ్రీ పరమేశ్వర శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం శుభే శుభతిథౌ శోభనే ముహూర్తే ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये इदानीं मंगलकर शोभकृत नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां शुभतिथौ
वासरः रविवासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां पौर्णमास्यां शुभतिथौ మీ గోత్రాలు చెప్పుకోండి, మీ నక్షత్రాలు, మీ పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, నక్షత్రము. మీ కూతురు పేరు, కొడుకుల పేరు, అందరి పేరు చెప్పుకోండి. మీ కుటుంబంలో ఎవరు ఉన్నారో అందరి పేరు, నక్షత్రాలు తెలిసింటే. అందరిది అయింది కదా. అస్మాకం సహకుటుంబ వర్గాణం సర్వేషాం భక్త మహాజనానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం విశేషేణ సమస్త సన్మంగళ అవాప్త్యర్థం उत्तरोत्तर क्षेम अभिवृद्ध्यर्थम मनसि ईप्सिता सकल कामना सिद्ध्यर्थम आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवनवजनित तापत्रय निवारणार्थम जातकरीत्या गोचाररीत्या आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणां शुभस्थान अवाप्त्यर्थं ये ग्रहाः शुभ एकादश स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभफल अवाप्त्यर्थं महागणपति प्रसादेन सकल कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रहेण यो दोषः समजनि तद्दोष पीडा परिहारार्थम आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थम मृत्युंजय प्रसादेन अपमृत्यु अपघातादि समस्त उपद्रव निवारण द्वारा दीर्घायुष्य अभिवृद्ध्यर्थम कुलदेवता इष्टदेवता प्रसादेन सर्वारिष्ट शांत्यर्थम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम गृहे दिने दिने कल्याण परंपरा अवाप्त्यर्थम उत्तरोत्तर क्षेम अभिवृद्ध्यर्थम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक श्री सत्यसाईश्वर स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम साईश्वर चरणारविंदयोः अचंचल निष्कपट भक्ति ज्ञान सिद्ध्यर्थम अस्य स्वामी प्रेरणया अस्मिन् दिवसे विशेषतः गुरुपौर्णमी महोत्सव अंगभूतं सद्गुरु परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्री साई सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम ध्यानादि षोडश उपचार पूजा
आराधनाख्यम कर्म करिष्ये ध्यानादि षोडश उपचार पूजा आराधनाख्यम कर्म करिष्ये అక్షంతలు ఇప్పించుకోండి నీళ్ళు వేయండి ఆడవాళ్ళ నీళ్ళు వేయండి అపౌపస్పృశ్య తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే కలశం గంధాక్షతపత్రపుష్పైరభ్యర్చ ప్రదక్షిణ కలశం గంధాక్షతపత్రపుష్పైరభ్యర్చ హస్తేనాచ్ఛాద్య कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाहिताः मूले तत्रस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृनाथाः कुक्षौ सागरः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दराः ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्चैताः सर्वे कलशां समाहिताः आयान्ते पूजार्थं दुरितक्षेकारकाः गङ्गे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जले सन्निधिं आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापप्राणावापप्रवापो सम्राडापो सम्राडाप छन्दास्यापो ज्योतिषापो यदुषाप सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापो इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती शतद्वैस्त्वमृतमृतमृत्या असिक्नियामृतदेवस्तयार्जिके शृणुया सोमया अस्मिन् कलशे गङ्गादि सर्वतीर्थानि वाक्या उद्धरणि तोंड प्रोक्षण कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष देवं सम्प्रोक्ष आत्मानं च प्रोक्ष शेषं विसृज्य शेषं विसृज्य आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजां करिष्ये अंदरू गणपतिनि प्रार्थिंचंడి ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमः ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् अस्मिन् बिम्बे ओं भूः गणपतिमावाहयामि भुवः गणपतिमावाहयामि स्वः गणपतिमावाहयामि भूर्भुवः स्वः महागणपतिमावाहयामि महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि समर्पयामि स्नानं प्रोक्षणे मडि आपोहिष्ठामयो भुवस्थानवोर्जयदातन महेरणाय चक्षसे योमश्वतमालसस्तस्य वाजयतेन उषधिर्व मातरः तस्मारङ्गमां वायुसक्षयाय जन्मतः आपो जनयतानः स्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि उपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि आभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमसिन्दूरान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ फालचन्द्राय नमः ॐ कुमारगुरवे नमः ॐ मूषकवाहनाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः गणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि शाङ्गं धूपं सुगन्धं च समनोहरं कपिलाकृतं संयुक्तं धूपोऽयं धूपमाग्रापयामि स्थापिता प्रज्वलितदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् नैवेद्यम् ॐ भूर्भुवत्स्वः व्रतन्त्वा सत्येन परिञ्चामि कामधेन स्मरामि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा महागणपतये नमः कदलीफलं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि मृताभिधानमसि उत्तरापोषणम् हस्तप्रक्षालनं पादप्रक्षालनं राजनं समर्पयामि भूर्भुवस्वः पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्प दक्षिणान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि
ఓం నిశసేద గణపతే గణేశత్వమాహర్విప్రథమం కవీనా నరుతేత్రియతే కించన హరే మహామర్కం భగవంతి ప్రమత్తా. మహాగణపతయే నమః. కర్పూర నీరాజనం సందర్శయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. పరిమళపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి. రక్షాన్ ధారయామి. ఓం హర ఓం హర ఓం హర. నమో వ్రాతపదయే నమో గణపతయే నమః ప్రమదపదయే నమస్తే స్థలంబోధరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుదాయ శ్రీ మూర్తయే నమో నమః. వేదోక్తమంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష గణనాయక. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అక్షత నీరకుండి. తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. ప్రసన్నార్ఘ్యం సమర్పయామి. ప్రార్థనం కరిష్యే. ప్రార్థన చేయండి. భవ సంచిత పాపౌఘ విద్వంసన విచక్షణ విఘ్నాంధకార భాస్వంతం విఘ్నరాజం అహం భజే వినాయక. నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియా. ఈప్సితం మే వరందేహి పరత్ర చ పరాంగతిం. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. మహాగణపతయే నమః. మనసాభీష్ట ప్రార్థనాం సమర్పయామి. ఛత్ర చామరాది సమస్తోపచార పూజాం సమర్పయామి. అక్షత తಗೊಳ್ಳಿ. నీళ్ళైన అనేన పూజారాధనేన విఘ్నహర్తా శ్రీమన్ మహాగణపతి దేవతా సుప్రీతా సుప్రసన్న వరదా భవంతు. అథ ఆదిత్యాది నవగ్రహ ప్రార్థనం కరిష్యే. అందరూ నవగ్రహాల్ని ప్రార్థించండి. సూర్య శౌర్యం అథ ఇందుః ఇంద్రపదవీం సన్మంగళం మంగళః సద్బుద్ధించ బుధః గురుశ్చ గురుతాం శుక్రః శుభం శంశనిః రాహుః బాహుబలం కరోతు విజయం కేతుః కులస్య ఉన్నతిం నిత్యం ప్రీతికరాః భవంతు సతతం సర్వే అనుకూలాః గ్రహాః అరిష్టాని ప్రణశ్యంతు దురితాని భయాని చ శాంతిరస్తు శుభం మేస్తు గ్రహాః కుర్వంతు మంగళం. నవగ్రహ దేవతాభ్యో నమః. ప్రార్థనాః సమర్పయామి. అథ ఓక్ష తಗೊಂಡು సాయి సత్యనారాయణ నా ప్రార్థన ಮಾಡ್ಕೊ. ఫలపుష్పాదీని మంటపాలనంకృత్య తన్మధ్యే కలశం సంస్థాప్య వస్త్రేణాచ్ఛాద్య తత్కలశాంతరాలే పంచపల్లవం ధాన్యస్యోపరి కలశం స్థాపయేత్. సమాహిత మనసాన్ శ్రీ సత్యసాయీశ్వర సత్యనారాయణం ధ్యాయేత్. ధ్యాయేత్ సత్యం గుణాతీతం గుణత్రయ సమన్వితం లోకనాథం త్రిలోకేశం కౌస్తుభాభరణం హరిం నీలవర్ణం పీతవాసం శ్రీవత్స పదభూషితం గోవిందం గోకులానందం బ్రహ్మాద్యైరపి పూజితం. హృదాకాశే సదా భాంతం శాంతమానందరూపిణం జ్ఞానభానుమహం వందే సద్గురుం సత్యసాయినం. శ్రీ సత్య సాయి సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ధ్యాయామి. ధ్యానం సమర్పయామి. భూమి ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿವನಾಪ್ರದ ವಿಭಾಂದ್ರಕ್ಷರಾ ನಿವೇಶನೆ ಭೂಮಿಂ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ವರಸ್ತಾತ್ ವಿಧೀಮತ ಸುರುಚೋ ವೇಣಾವಹ ಸಬುದ್ಧಿಯಾ ಉಪಮಾಸ್ತ ಸದಶೋಯಾನಿವರ್ತಿವಃ ನಾಕೆ ಸುಪರ್ಣಂ ಪಯತ್ ಪದಂತಗಂ ವೃದಾವೇನಂತೋ ಅಭಿಷಕ್ತತ್ವ ಹಿರಣ್ಯಪಕ್ಷಂ ವರುಣಸ್ಯ ಯಮಸ್ಯೋನೋ ಆಪ್ಯಾಯ ಸುಮೇತ ವಿಶ್ವಸ್ವಾಮೃಷ್ಣ್ಯಂ भवाजसंगते यो रुद्रो अग्नो यो ऋद्रो विश्वाभुवनावेश्मैर्द्राय नमोऽस्तु
इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानदेवदं समूढमस्य भागं सुरे इन्द्रं विश्वा अभिवृधन् समुद्रपदिङ्गिरः प्रतीतं कृतीनां वाजानां सत्पदिं पदिम् आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आपो नापो माप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दागस्यापो ज्योतिगिस्यापो यजोगिस्यापो सत्यमाप सर्वा आपो भूर्भुवत्स्वरापो कूर्चाग्रेराक्षसान् घोरान् छिन्दिकर्मविगादिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मसु वृक्षराजसम्भूताः शाखाया पल्लवत्वजः युष्मान् कुम्भे तर्पयामि सर्वपापापनुत्तये नारिकेलसमुद्भूता त्रिनेत्र रसंवदा श्रेयादृतं सर्वं पापं पीडां च मे नुदा सैरत्नानि दाशे सुवादिवितापगाः सम्भागं चित्रमीमहे इमं मे वरुणश्रुतियौद्यात्मया त्वामोऽस्राजके तत्त्वायामि ब्रह्मणां नमास्वाजास्ते जमानो विभे अस्मिन् कलशे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि आवाहयामि. This is happening is Kalasharadhana. So since all of you don't have kalashas, Kalasha Sthapana is being done here. Just do namaskaram and your presence here. ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अस्मिन् कलशे साई सत्यनारायण स्वामिनं ध्यायामि आवाहयामि. आवाहिता श्री साई सत्यनारायण स्वामी देवता प्राण प्रतिष्ठापन महामंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुस्सामाथर्वाणि छन्दांसि प्राणशक्तिः परा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः रूं कीलकं मम सकल कामना सिद्ध्यर्थे साई सत्यनारायण व्रतांग कलश आवाहने विनियोगः. ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः रूं मध्यमाभ्यां नमः रैं मनामिकाभ्यां नमः रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः रहः करतलगरुष्टाभ्यां नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा रूं शिखायै वषड रैं कौचाय ह्रौं नेत्रत्रयाय वषड रहः अस्त्राय फट् भूर्भुवत्स्रोदिग्बन्धः ध्यानं रक्तांबोधिस्तपोतोलसुव अंद्र पूलोक्षत्र కోటన్న ముట్టుకోండి. रक्तांबोधिस्तपोतोलसन सरोजादरूढाकराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षोद्भोगमनिकटशं पञ्चबाणान् बिभ्राणान् कृपालङ्करणेनतापीनपक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरे प्राणशक्तिपरान्नः. ॐ ह्रां ह्रीं क्रूं या रालावा शाशासाः सोऽहं वंशः आवाहिता श्री साई सत्यनारायण स्वामी प्राणाः मम प्राणाः आवाहिता साई सत्यनारायण स्वामी जीवः मम जीवः वाङ् मनः चक्षुश्रोत्र जिह्वाघ्राणैः उच्छ्वास निश्वास रूपेण बहिरागत्य अस्मिन् कलशे धान्ये पटे च सुकञ्चिरन् तिष्ठन्तु स्वाहा. असुनीते पुनरस्मा चक्षुः पुनः प्राणो मिहिनो देहि भोगो जोक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृळयान स्वस्ति. अमृतं वै प्राणाः अमृतमापः प्राणानेव यथा स्थानमुपक्वयते स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कलशेऽस्मिन् पटेऽस्मिन् च सन्निधिं कुरु. Put a flower on the picture that is given to you. Jai Sai Ram. अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव व्याप्तो भव मम सर्वाभीष्टफलप्रदो भव. वाङ् आसन् नसो प्राणः अक्षोश्चक्षुः कर्णयो श्रोत्रं बाहुवोर्बलं ऊर्वोरोजः अरिष्टा विश्वान्यङ्गानि तनूः तनुवा मे स नमस्ते स्तुमामाहि पुंसीः नर्यप्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जाताञ्च निश्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठितान् प्राणान् प्रतिष्ठापयामि. प्राणशक्त्यै नमः. यथा नैवेद्यम् यथा भागशः नैवेद्यं निवेदयामि. अथ द्वारपालक पूजां करिष्ये. Now they are going to do the Dwarapalaka Puja. Imagine that there is a periphery around the Murti of Swami with you, and imagine invoking all the Dwarapalakas. ओम पूर्वद्वारे वो पूजा पूर्वद्वारे द्वारश्रे नमः धात्रे नमः
विधात्रे नमः दक्षिणद्वारे द्वार्षे नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वार्षे नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे द्वार्षे नमः कुमुदाय नमः कुमुदाक्षाय नमः तन्मध्ये नवरत्नखचित दिव्यसिंहासनोपरि श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वारपालक पूजां समर्पयामि पीठपूजां करिष्ये पीठस्याधो भागे आधारशक्ते नमः मूलप्रकृते नमः कूर्माय नमः दक्षिणे क्षीरोदये नमः सिंहाय नमः सिंहासनस्य आग्नेये कोणे कूर्माय नमः नैऋत्यकोणे ज्ञानाय नमः वायुकोणे वैराग्याय नमः ईशान्यकोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्वदिशे धर्माय नमः दक्षिणदिशे ज्ञानाय नमः पश्चिमदिशे वैराग्याय नमः उत्तरदिशे अनैश्चराय नमः पीठमध्ये मूलाय नमः नाळाय नमः पत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकायै नमः कर्णिका मध्ये संसत्वाय नमः रं रजसे नमः तं तमसे नमः अमात्मने नमः अंतरात्मने नमः पं परमात्मने नमः ओं ह्रीं ज्ञानात्मने वन्द्यमण्डलाय दशकलात्मने नमः सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः मध्ये सकलगुणशक्तियुक्ताभ्यः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः पीठपूजां समर्पयामि दिक्पालक पूजां करिष्ये इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः दिक्पालक पूजां समर्पयामि कुसुमाक्षतान् गृहीत्वा पूलु अक्षंतु చేతిలో పెట్టుకోండి ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात् श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि रत्नैर्नानाविधैर्युक्तं स्वर्णपीठं विराजितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः रत्न सिंहासनं समर्पयामि రెండు మాటలు ఉద్ధరణలో నీళ్లు వదలాలి వ్యక్త స్వరూపాయ ఋషికపదయే నమః మయా నివేదిత అర్ఘ్యోయం प्रतिगृह्यताम् ఓం మందాకిన్యాస్తు श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकपदये नमः मया निवेदितो भक्त्या अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव सम्यगाचमनं त्वया श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि अथ मधुपर्कम् दधिक्षीरघृतोपेतं शर्करा मधुसंयुतं मधुपर्कं ग्रहाणेदं सच्चिदानंद विग्रह श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः मधुपर्कं समर्पयामि अथ स्नानं नीरत्तुंडु प्रोक्षणे నీళ్ళతో ప్రోక్షణ చేయండి ఫస్ట్ నీరు ఆమెల ఓం ఆపోహిష్టామయో భువస్థాన ఓర్జేదధారణ మహేరణాయ చక్షుర యోవశివతమోరసస్తస్య వాజేతేన ఉషతీరివ మాత్రః తస్మా అరంగమాం వోయస్య క్రియాయమత ఆపో జనయతాజనః श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम आप्याय स्वतमेव विश्वतः सोम वृष्णियं भवावाजसंगते ओम दधिक्रावण्योकारं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभिनो अमकाकरत्रणायोगं शिदारिषत शुक्रमसिज्योतिरसितेजो देवो वत्सवितो पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः मध्वपातार्तायते मधुक्षरं ददिन्दवः माध्वीर्न सन्तोषीः मधुनक्तमुतोषधि मधुमत्पार्थिवमृजः मधुद्योरस्तुनः पिता मधुमान् नो वनस्पतिर्मधुमाग्मस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः स्वादुपवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुन्द्राय सहवेतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमाम् अदाभ्यः या फलनेर्या अपला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तमसः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः फलपञ्चामृत स्नानं समर्पयामि नीर्प्रोक्षणम् आपोहिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जेदधातना महेरणा चक्षुषे योपशिवतमोरसस्तस्य वाजेतेनः उषतीरिव मात्रः तस्मा अरङ्गमां वोयस्या आपो जनयतातनः
श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वतुळि वेद सूक्त समायुक्ते यज्ञ सामसमन्विते स्वर्णवर्णे तो देवा वाससे प्रतिगृह्यताम् इमं वस्त्राणि पे वसावसाथे इवोर्च्छिद्रा मन्तवो सर्गाः अवातिरतमनृतान् विश्वऋतेन मित्रावरुणा सचेथे श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ब्रह्म विष्णु महेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रियतां कमलापतिः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः उपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि आचमनीयं Offer a flower. समर्पयामि Offer a flower to the picture. Sairam. I should say Swami. ओम श्रीकंठं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गंधद्वारान्तरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिवोपक्वये श्रियं श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्य परिमल गंधान् धारयामि ओम शालीयानक्षतान् श्वेतान् चंद्राभान् विमलान् शुभान् ग्रहाण सत्यदेवेश पुराण पुरुषोत्तम आयनेते परायणे दूर्वारोहन्त पुष्पिणीः हृदाष्टपुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहाय मे श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः गन्धस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि माल्यानि च सुगन्धीनि मालित्यादीनि च प्रभो मयार्तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पमालां समर्पयामि पशु कुंकुम पूजेయండి हरिद्राचूर्णम अंबितमे नदीतमे देवितमे सरस्वती अप्रशस्ता इव स्मृति प्रशस्तिमं वनस्कृति हरिद्राचूर्णम समर्पयामि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते कुंकुमचूर्णम समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि अथ अंगपूजां करिष्ये अक्षते इद्रे రెండు అక్షతలు If you take a few akshatas and offer to Bhagwan अंग पूजा as you are worshipping him from toe to the tip. ओम सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः गुल्पौ पूजयामि सत्यनिधये नमः जानुने पूजयामि सत्यसंकल्पाय नमः जंघे पूजयामि सत्यधीशाय नमः ऊरून् पूजयामि सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि सत्यसेव्याय नमः जघनं पूजयामि सत्यवटवे नमः कटिं पूजयामि सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वं पूजयामि सत्येष्टाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि सत्यपरायणाय नमः स्कंदौ पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहून् पूजयामि सत्यवक्षाय नमः हस्तौ पूजयामि सत्यसंतुष्टाय नमः कंठं पूजयामि सत्यवेदाय नमः वदनं पूजयामि सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि सत्यशर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुवौ पूजयामि सत्यानंदाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्योपशे नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाण्यंगानि पूजयामि अथ पुष्पपूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः चंपक पुष्पं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजी पुष्पं समर्पयामि सत्यनिधये नमः कल्हार पुष्पं समर्पयामि सत्यसंकल्पाय नमः शतपत्र पुष्पं समर्पयामि सत्यदेशाय नमः कमल पुष्पं समर्पयामि सत्यरूपाय नमः मल्लिका पुष्पं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः सेवंतिका पुष्पं समर्पयामि सत्यवर्माय नमः इरुवंतिका पुष्पं समर्पयामि सत्योदराय नमः करवीर पुष्पं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः गिरिकर्णिका पुष्पं समर्पयामि सत्यकाय नमः कामाय नमः तदे पुष्पं समर्पयामि सत्येष्टाय नमः पारिजात पुष्पं समर्पयामि सत्यपरायणाय नमः पुन्नाक पुष्पं समर्पयामि सत्यशौर्याय नमः कुंद पुष्पं समर्पयामि सत्यक्षयाय नमः मालती पुष्पं समर्पयामि सत्यसंतुष्टाय नमः केतकी पुष्पं समर्पयामि सत्यदक्षाय नमः मंदार पुष्पं समर्पयामि सत्याच्युताय नमः पाटली पुष्पं समर्पयामि सत्यवर्मणे नमः अशोक पुष्पं समर्पयामि सत्यपूर्णाय नमः पूक पुष्पं समर्पयामि सत्यौषधाय नमः दाडिमी पुष्पं समर्पयामि सत्यानंदाय नमः देवदार पुष्पं समर्पयामि सत्यवपुषे नमः सुगंधराज पुष्पं समर्पयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः अर्क पुष्पं समर्पयामि श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पपूजां समर्पयामि अथ पत्रपूजार्थं पत्रपूजां च करिष्ये
ओम सत्यदेवाय नमः तुलसी पत्रं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजी पत्रं समर्पयामि सत्यविभवाय नमः चंपकपत्रं समर्पयामि सत्यसंकल्पाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि सत्यदेशाय नमः दूर्वायुग्मपत्रं समर्पयामि सत्यरूपाय नमः सेवन्तिकापत्रं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः मरुगपत्रं समर्पयामि सत्यौषधाय नमः सुगंधपत्रं समर्पयामि सत्योदराय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः विष्णुक्रांतिपत्रं समर्पयामि सत्यकामाय नमः माचीपत्रं समर्पयामि सत्येष्टाय नमः मल्लिकापत्रं समर्पयामि सत्यपरायणाय नमः इरुवन्तिकापत्रं समर्पयामि सत्यशौर्याय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि सत्यदक्षाय नमः पारिजातपत्रं समर्पयामि सत्यसंतुष्टाय नमः दाडिमीपत्रं समर्पयामि सत्यवेदाय नमः बद्रीपत्रं समर्पयामि सत्याच्युताय नमः देवदारपत्रं समर्पयामि सत्यवर्मणे नमः शमीपत्रं समर्पयामि सत्यपूर्णाय नमः च्यूतपत्रं समर्पयामि सत्येश्वराय नमः अमलकपत्रं समर्पयामि सत्यानन्दाय नमः वटपत्रं समर्पयामि सत्य उपशय नमः कमलपत्रं पत्रं समर्पयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः वेणुपत्रं समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः पत्रपूजां साई सत्यनारायण स्वामिने नमः पत्रपूजां समर्पयामि अथ आवरण पूजां करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः सत्यात्मने नमः सत्यनियोम अथ प्रथमावरणं सत्येष्टाय नमः दामोदराय नमः सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम नराय नमः अच्युताय नमः आदिमध्यांतशून्याय नमः विष्णवे नमः हरये नमः सृष्टिसंहारकाय नमः दामोदराय नमः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः प्रथमावरण पूजां समर्पयामि ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः वन्यमंडलाय नमः सूर्यमंडलाय नमः सोममंडलाय नमः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वितीयावरण पूजां समर्पयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्षयाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः द्वितीयावरण पूजां समर्पयामि आदित्याय नमः चंद्रमसे नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनेश्वराय नमः राहवे नमः केतवे नमः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः चतुर्थावरण पूजां समर्पयामि इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः पंचमावरण पूजां समर्पयामि मेषाय नमः वृषभाय नमः मिथुनाय नमः कटकाय नमः सिंहाय नमः कन्याय नमः तुले नमः वृश्चिके नमः धनुषे नमः मकराय नमः कुंभाय नमः मीनाय नमः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः षष्ठावरण पूजां समर्पयामि ब्राह्मे नमः माहेश्वर्ये नमः कौमार्ये नमः वैष्णव्ये नमः वाराक्ये नमः इंद्राण्ये नमः चामुंडायै नमः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः सप्तमावरण पूजां समर्पयामि मत्स्याय नमः कूर्माय नमः वराहाय नमः नारसिंहाय नमः वामनाय नमः परशुरामाय नमः श्रीरामाय नमः बलभद्राय नमः कल्किने नमः श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टमावरण पूजां समर्पयामि अथ साई अष्टोत्तर दिव्य शतनामावली पूजां करिष्ये ओम श्री साई सत्य साई बाबाय नमः ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः ओम श्री साई सत्य धर्मपरायणाय नमः ओम श्री साई वरदाय नमः ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः ओम श्री साई सर्वे नमः ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः ओम श्री साई महिमात्मने नमः ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः ओम श्री साई यशकाय शिरडी वासिने नमः ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः
भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तंभसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेद शक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तट पुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई दीनजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रय स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। कलुषविदूराय नमः। श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोग निवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनंतरुतकर्तृणे नमः। आदि पुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूप शक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्त रूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकांबरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बांधवाय नमः। प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेम मूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेम प्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्त प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्त मंदाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजन हृदय विहारिणे नमः। ओम श्री साई भक्तजन हृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्त पराधीनाय नमः। भक्ति ज्ञान प्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्ति ज्ञान प्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञान मार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान स्वरूपिणे नमः। ओम श्री साई गीता बोधकाय नमः। ज्ञान सिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदर रूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्य पुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराण पुरुषाय नमः। अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धि रूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्न वस्त्रप्रदायिने नमः। ओम श्री साई संसार दुःख क्षयकराय नमः। सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याण गुणाय नमः। कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधु मानस शोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमत सम्मताय नमः। ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय नमः। ओम श्री साई सकल तत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। योगींद्र वंदिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः। ओम श्री साई सुलभ प्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई बाबाय नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि। धूपमाग्रापयामि। ओम वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धाढ्यो धूपोत्तमः। आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः। धूपमाग्रापयामि।
దీపం దర్శయామి. అక్కడ ఒకటి ఒకటి ఇచ్చాను, ఒకటి 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 ఉంది కదా, ఒకటి. ఓం భక్త్యా దీప ప్రయచ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాన్నరకాఘోరా దివ్యజ్యోతిర్నమోస్తుతే. శ్రీ సాయి సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. ఏకార్తి దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. అథ నైవేద్యం. There is a packet of naivedyam that is present also. You can take a little bit, put it in your plate and offer it to Swami. ఓం As well as fruits. పరహించయామి. కామధేనోస్పరామి. అమృతమస్తో అమృతోపస్తరణమసి స్వాహ. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. వ్యానాయ స్వాహ. ఉదానాయ స్వాహ. సమానాయ స్వాహ. బ్రహ్మణే స్వాహ. శ్రీ సాయి సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. సపాతభక్షం నివేదయామి. నారికేళ, కదలీఫల, కాశ్మీరఫల, ఆమ్రఫల, దాక్షాఫల నైవేద్యం నివేదయామి. మధ్యే మధ్యే అమృతపానీయం సమర్పయామి. అమృతాపిధానమసి. ఉత్తరాపోషణం, హస్తప్రక్షాళనం, పాదప్రక్షాళనం, పునరాచమనం సమర్పయామి. భూర్భువత్సువః. పూగీఫలసమాయుక్తం నాగవల్లేదళైరితం కర్పూరచూర్ణయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. పూగీఫలతాంబూలం సమర్పయామి. హిరణ్యగర్భాయ నమః. సువర్ణపుష్పదక్షిణాన్ సమర్పయామి. సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దధాతే మధవ్యోసానేతే ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ యజమాన ఆయుస్తేజో దధాతి. శ్రీ సాయి సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. సర్వాపరాధ క్షమాపణార్థే సర్వమంగళ ప్రాప్త్యర్థే మంగళ నీరాజనం సందర్శయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. పరిమళపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి. రక్షాంధారయామి. ఓం హర ఓం హర ఓం హర. Govindo Govinda. Hari. ఓం యో వేదాదౌ స్వర ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిలీనస్య పరః స మహేశ్వరః. వేదోక్త మంత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. నీవు అక్షర నిరప్పి. సాయీశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వ ప్రచోదయాత్. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ప్రసన్నార్ఘ్యం సమర్పయామి. అక్షతే ప్రార్థన చేసుకోండి. రుణరోగాది దారిద్ర్య పాపక్షత్ అపమృత్యవ భయశోక మనస్తాపాః నశ్యంతు మమ సర్వదా. త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవా. ప్రార్థనాః సమర్పయామి. పసుపు చెప్పండి. ఇదం ఫలం మయా దేవ స్థాపితం పురతస్థవ తేన మే సఫలావాప్తిః భవేత్ జన్మని జన్మని. పూర్ణఫలం సమర్పయామి. అథ వ్రతకథార్థః. Chapter 1 Advent and Divine Childhood. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba was born in a small village called Puttaparthi in the Andhra region of South India. His father's name was Sri Pedda Venkapparaju and his divine mother's name was Ishwaramma.
Mother Ishwarama was a very pious lady, always performing one or the other penance to please the Lord. Lord Narayana, being very pleased with her true divine love, decided to be born once again and to enact once more his divine drama. His therefore chose dear Ishwarama as his mother and Pedavenkaparazu as his father. It is believed, according to Mother Ishwarama's own testimony, that when she was drawing water from a well, a sparkling blue light from heavens descended down and entered her womb. She fainted and fell. Ishwarama's mother-in-law had warned her earlier that if something should happen to her through the will of God, she should not be frightened. This secret was not revealed to anyone. Bhagavan's birth was not through conception, but by the advent. Bhagavan himself asked Mother Ishwarama to share her experience near the well a few days before her Mahasamadhi. As Ishwarama was advancing in her pregnancy and as the 9th month drew closer, musical instruments in the house would play divine notes all by themselves. The drums would beat, the veena would twang, the cymbals would clang, and all the inmates of the house would be awakened by their divine melody and fragrance. At last, the November of 23rd of November 1926 dawned. It was a Monday, the day of Lord Shiva. It was the year of bountiful and the month of lights. Ishwarama's mother-in-law had just finished the Sathya Sai, Satyanarayana Puja and offered the divine prasad to her daughter-in-law. Soon after, Ishwarama ate the prasad and Sri Sai Narayana was born. The boy was extremely handsome. He was named Sathya Sai Narayana. One day, while baby Satya was sleeping in his cradle, the woman nearby was surprised to see the clothes under the baby moving. When they lifted baby Satya, they found a snake slithering away from the Lord, disappearing within a few yards. Well, the Lord Adisesha, having missed his Lord in Vaikuntha, must have come down to give him company. Satyanarayana, as a child, would never touch any non-vegetarian food, nor would he visit house where it was prepared. There lived a Karanam, Subbamma, who was very Sattvic lady, and she was fond of dear Satya. He would spend most of his time in her house. Even in this avatar, there had to be a Shoda. Any beggar who came to Satya's parents' house would not be sent away empty-handed. Satya saw to it that the beggar would be fed sumptuously, and sometimes he would himself forego food, and his sister and mother would get irritated with his constant charity. Later, when they would call him for lunch, Satya would hold his tiny lotus palms under their noses and ask them to smell. They would discover the most delicious and mouth-watering smell from those divine red palms. When they questioned him as to where he had eaten, Satya's prompt reply was, "An old man fed me." Even as a child, Satya started revealing his true nature, love. He could never see his friends sad. He would often create fruits, candies, and pencils to make them happy. He would collect all the tiny tots and make a dollhouse, installing small pictures of gods inside and teaching his friends bhajans. After completing his primary schooling, Satya was admitted to nearby Bukkapatnam village for elementary studies. Even there, Satya became very popular amongst his schoolmates. One of his teachers, Mehboob Khan, was very fond of Satya. One day during class, another teacher found Satya not taking down the notes he was dictating. The teacher's ego was hurt. The teacher, he made Satya stand on the bench as a punishment. The teacher's period was over. The bell rang. However, the teacher could not get up from his chair. Satya was still standing on the bench when the next teacher, Mehboob Khan, entered the class. Khan went near his colleague, who was now thoroughly embarrassed, and requested him to vacate the chair. The poor teacher was almost in tears. He said, "Sahib, the teacher was stuck to me." Khan looked around the class. As all the children had overheard their teacher's conversation, they were giggling. Khan saw to his utter
dismay, dear Satya standing on the bench and enjoying the whole drama. Khan was shocked and asked the teacher to bring Satya down, as then only he would get up from his chair. The teacher, who was already humiliated and very ashamed, requested Satya to get down from the bench. As soon as he did so, the teacher's chair was also released. In this way, Satya began revealing himself. One day, a Tanga horse carriage driver lost his horse. He searched everywhere but to no avail. Someone told him that there was a divine boy studying in the school nearby, and he would reveal to him the whereabouts of his horse. Just as in Shirdi Avatar, Satya beckoned to the man gently and told him that his horse was grazing outside the village in a mango grove. The driver found to his great joy his horse just as Satya has described. From then on, all the Tanga drivers would pray to Satya to sit in their Tanga so that they too would be blessed and have more business. The first chapter of Sri Sathya Sai, Sathya Sai Narayana Katha, ends with all auspiciousness. Bow to Sri Sai, peace to be to all. ओम श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रथमाध्यायानन्तरं समस्तोपचार पूजां समर्पयामि यथा भागशः। नैवेद्य माडि आरती आरती नारिकेळखण्डद्वयं निवेदयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि समस्त उपचारान् समर्पयामि। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। साई सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रथमाध्यायानन्तरं नीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि। ॐ अथ द्वितीयोऽध्यायः। Chapter 2, Sai Baba's mission begins. On 8th of March 1940, Satya gave a piercing scream and fell down unconscious. He was holding his right toe tightly. Everyone at home thought that a scorpion had bitten him. But actually, Satya had left his physical form to save some devotees, which all people around him did not know, as he did not do anything like that in the presence of others before. Everyone searched for the scorpion, but how could there be one when it was not the cause for Satya's state? After some time, Satya opened his eyes, but was as calm as before. The next day, once again, Satya fell down unconscious. Later, when he opened his eyes, he told the people around him that the village goddess Mutyalamma was angry, so one of them must go and break a coconut and light camphor before her. When the coconut was broken at the temple, Satya announced from home that it had broken into 3 pieces. It was true. Some people thought that Satya was possessed by spirits. They started treating him with all kinds of medicines and herbs. Others thought that Satya had gone mad, and they sent for his parents. Satya's parents came and were shocked to see their loving son in such a state. Even they did not know what to do, so they took him to an exorcist. The exorcist had a very cruel way of driving away spirits. He cut loving Satya's tender scalp with a sharp knife, squeezing in lime juice and applying a very pungent powder which bulged sweet Satya's face to abnormal proportions. His eyes swelled to an enormous size. Seeing his terrible condition, Satya's mother and sister were very sad but helpless, as they had handed Satya over to the exorcist. Observing their plight, Satya beckoned to his sister and told her that nearby there grew an herb. He told her to make juice from that herb and apply it to his eyes. The mother and sister pleaded with the exorcist to leave Satya alone, saying they would bring him once again when he was fit. The exorcist left Satya with great reluctance. According to Satya's suggestion, they put a few drops of that herbal juice into his eyes, and before long, they were normal and sparkled with mischief. Days passed with Satya expounding his high Vedic philosophy to the villagers. He also began talking about a saint called Sai Baba. The father, Pedavenkapparaju, could stand this no longer. One day, he approached Satya with a stick in his hand to beat the devil out of him. He asked Satya, "Who are you? Tell me."
the truth. Satya calmly replied with love and authority, I am Sai Baba. Keep your houses clean and your minds pure. I shall dwell in them forever. The stick in Padmavenkaprasu's hand fell down. He was dumbfounded. He said, if you are really if you are really Sai Baba, show us proof. Satya took a handful of jasmine flowers in his hands and threw them on the ground. They fell, forming the letters Sai Baba in Telugu. From that day onwards, everyone in the village and nearby villages started calling Satya Sai Baba. They began worshipping him with great devotion and offered special pujas to him every Thursday. The second chapter of Sri Sathya Sai Narayana Katha ends with all auspiciousness. Bow to Sri Sai. Peace be to all. ओम द्वितीयाध्यायानन्तरं साईनाथाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि यथा भागशः नैवेद्यं निवेदयामि उगीफलताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाते मधव्योसानेते एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति। द्वितीयाध्यायानन्तरं नीराजनं सन्दर्शयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्षान् धारयामि। ॐ हर अथ तृतीयोऽध्यायः। Chapter 3, Bala Sai's divine leelas. As Satya grew older, the people of the village began to notice his hidden powers. They started reverentially calling him Swami. One day, Swami and his family members visited the Virupaksha temple at Hampi. When they arrived at the temple, Swami did not accompany the others inside. Instead, he stood near the temple's gate. When the puja began in the sanctum, everyone was surprised to see Swami standing in the place of the lingam. They had just left him at the temple entrance. How could he be suddenly getting inside the sanctorium? They rushed out and saw Swami standing as before, all alone and gazing at the sky with an innocent smile on his rosy lips. Everyone awestruck and fell at Swami's feet. One day, Swami had returned home from school, threw away his school bag and announced loudly, Maya has left me. I am no more yours. My devotees are waiting for me. Swami's sister-in-law, who was inside, rushed out but was almost blinded by a bright aura surrounding Swami's head. She closed her eyes as she was unable to withstand its brilliance. Mother Ishwarama lovingly requested Swami, O son, if you must leave us and go to your devotees, please stay here in Puttaparthi itself and protect and bestow your grace upon all your children. Swami gracefully agreed to his mother's humble request. For a long time, Swami stayed with Karanam Subbamma, whose house was large and could accommodate the increasing number of devotees who came to see him. Moreover, Subbamma herself was an ardent devotee and loved Swami with all her heart. The devotees soon began coming from all over. Sometimes the food would be insufficient to feed everyone present. At such times, Subbamma would ask Swami for help. Swami would go into the kitchen and with 2 coconuts strike them against each other and sprinkle the coconut water over the food. Automatically, there would be enough to feed all the people present and there would be some more left over. As the number of devotees increased, they offered to build a bhajan hall alongside Subbamma's house. Once, while Swami was staying at Subbamma's house, a priest named Lakshmaya arrived with his friend and his friend's wife who was mentally ill. The priest made his friend and his wife wait at the banks of the river Chitravati. The priest arrived at Subbamma's house and came across Swami. Not knowing who he was, the priest addressed him saying, I believe there is a boy here who cures ailments. Could you please take me to him as I have brought my friend and his mad wife? Swami asked the priest to bring the couple to him. He told them to have a bath and to sit with the other devotees. Swami then distributed prasad to everyone. He created divine vibhuti and put some in the mad woman's mouth. Later, he cut some fruits
which the couple had brought as offerings to him, and gave them the same to eat. Within no time, as the people were watching, the mad lady became normal. Bowing with great reverence to Swami, she and her husband left happily. As the life of Karanam Subbamma was coming to an end, Swami made her perform lots of charity. One day, when Swami left for Bangalore, Subbamma's health deteriorated, but her mind was constantly on her beloved Swami. Even her mouth, which uttered his holy name, stopped moving. Her breath stopped. She breathed her last, calling out Swami's name. At once, Swami appeared from nowhere. He called her, and with his loving voice, Subbamma, Subbamma, open your mouth. Subbamma, who was physically dead, opened her mouth, and her hands started fumbling and trembling to hold Swami's divine feet. Swami graciously took her hands into his, and with his right hand poured the holy Ganges water into her parched soul through her mouth. Subbamma, the true devotee of Swami, left the mortal coil with her eyes fixed on Swami's divine lotus face and merged in him. According to the wish of the devotee, Swami reveals himself as their chosen God. To some, he shows himself as Lord Ganesha. To some, as Lord Muruga. To some, as Sri Rama or Sri Krishna. And to yet others, as Christ. And he pleases all. Once a lawyer named Krishnamachari came to Puttaparthi from Perukonda with the sole intention of exposing Swami as a charlatan. He was taken to Swami by his father. Swami took the lawyer into a room and asked him to keep his eyes closed. When they entered the room, Swami asked him to open his eyes. The lawyer was surprised to see the samadhi of Shirdi Sai Baba with a garland dropped over it and the priest standing nearby with puja items in his hands. Swami told the lawyer to look at the other side. There he was at the Hanuman temple, the neem tree, the Gurusthan, and all the other sites in the holy town of Shirdi. The lawyer was an ardent follower of Shirdi Baba. When he received the darshan of Shirdi Baba's samadhi, he fell at Swami's lotus feet and asked him for pardon. The Dayamurti, embodiment of compassion, Swami patted his back and immediately pardoned him. Swami is all powerful. Whoever calls him in any name with love, he responds and blesses them. The third chapter of Sri Sathya Sai, Sathya Sai Narayana Katha ends with all auspiciousness. Bow to Sri Sai. Peace be to all. क्रियाध्यायानन्तरं ध्यानमावाहनादि समस्तोपचारान् समर्पयामि यथाभागशः नारिकेळ खण्डद्वयं निवेदयामि पूगीफल ताम्बूलं समर्पयामि स्वर्णपुष्प दक्षिणान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम पर्याप्त्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहर्भवते तस्याप्ते सर्वसयते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। तृतीयाध्यायानन्तरं नीराजं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्षान् धारयामि। ओम हर अथ चतुर्थोऽध्यायः। 4. Refuge of the devotees. Srimati Sakamma owned a very large coffee plantation. She was also a very sattvic and divine lady, performing lots of charity like feeding the poor, offering them clothes and so on. Recognizing her worth, the Maharaja of Mysore had bestowed upon her the title Dharma Parayani. One morning, around 9 o'clock, when she was performing her morning puja, Sakamma's servant came and informed her that some people had come in a vehicle and wanted to see her immediately. Sakamma came out and saw an old car on which a board was put with the words Kailas Committee.
In front was a young boy of 16 with his hair all scattered. At the back, an old man was seated majestically upon on a deer skin with flowing beard and holy ashes smeared on his body and forehead. Sakama welcomed the old man and worshipped him religiously, washing his feet and offering him flowers and fruits. The old man asked her to become a member of the Kailas committee by paying 1,000 rupees. She gladly paid, but the money and receipt were returned to her. The old man told her that he would visit again. A few years passed, but there was no sign of the Kailas committee. One day, Sakama had to go to Bangalore. While visiting one of her friends' houses, to her utter surprise, she saw the same young boy with the scattered hair. As she looked at him, the boy transformed himself into the old man and back again to the young boy. Sakama was stunned. She went close to the boy and asked him, "Were you not the one who came to my place as the Kailas committee?" The boy replied, "Many years ago, you had to pay 1,000 rupees, which you did not pay. Therefore, I had to come to take it from you." Sakama's eyes welled up with tears. She prostrated before Swami and earned his grace. One afternoon, while Swami was talking to some of his devotees, he suddenly shouted, "Do not shoot, do not shoot." He fell down unconscious. About after an hour, Swami arose and told the devotees to send a telegram stating, "Your revolver is with me, do not worry." Someone told Swami the word revolver should not be used as it would raise objections from the postal authorities. Hence, the word instrument was written instead and the telegram was sent. All were wondering and asked Swami about this sudden happening. Swami told them that they would know soon. 4 days later, a letter arrived from Bhopal, written by an army officer. Due to circumstances, the officer was upset and had decided to shoot himself. He fired one shot in the air to test the revolver. At that moment, from the other corner of India, Swami had shouted, "Do not shoot, do not shoot." At the same time, a knock occurred at the officer's door. The officer quickly hid his revolver and opened the door. An old classmate had come to visit with his wife and servant. The officer invited them inside. After a few minutes, they decided to visit the officer's neighbor, who was also their friend. Bolting the door after they left, the officer returned for his revolver, but he could not find it. Once again, he heard a knock on the door. He opened it and the postman gave him a telegram which read, "Your instrument is with me. Do not worry. Sender, Baba." Our Swami will not forsake nor let down whosoever worships him. One has to just call and he will immediately run to their aid with his four arms of truth, right action, peace, and love. His mahima is beyond words. In the above incident, the officer's wife was an ardent devotee of Swami. The 4th chapter of Sri Sathya Sai, Satya Narayana Katha, ends with all auspiciousness. Peace be to all. Bow to Sri Sai. साईनाराय नमः। चतुर्थाध्यायानन्तरं ध्यानमावानादि समस्तोपचारान् समर्पयामि। यथा भागशः नारिकेळखण्डद्वयं निवेदयामि। पूगीफल ताम्बूलं समर्पयामि। समस्त उपचारान् समर्पयामि। अथ नीराजनम्। पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रप्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति च देवं वेद। चतुर्थ्याध्यायानन्तरं नीराजनं सन्दर्शयामि। आचमनं समर्पयामि। परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। रक्षान् धारयामि। ॐ हर। अथ पंचमोऽध्यायः। Chapter 5. The ever merciful Swami. One day, Swami visited a home in Bangalore. Many people had assembled there to have his darshan. Some of them had brought flowers and fruits to offer Swami. Others were talking to about Swami's miracles and compassion. A poor cobbler overheard their talk. A beautiful thought suddenly came into his mind. He wished to have a glimpse of the avatar. He lovingly plucked a rose from the garden and squeezed his way through the crowd, slowly walking toward
where Swami was seated. He peeped inside, and at the same time, Swami also peeped out. Their eyes met, and at the very instant, for the cobbler, an irresistible love overflowed through him for Swami. Lovingly, Swami called out to him to come closer. The cobbler went near and offered him the rose. Swami graciously accepted the rose and asked him in Tamil, the cobbler's mother language, "My dear, what do you want?" The cobbler was not prepared for this question. He replied, "Swami, please visit my hut." Swami responded, "Definitely, I will visit." Tears of joy overflowed from the cobbler's eyes. With reverence, he fell at the lotus feet of Swami. In his excitement, he had forgotten to ask where he would grace him, when he would grace him to his hut. After Swami left the residence, all those questions came into his cobbler's mind. Days passed, but there was no sign of the Lord's visit to the cobbler's hut. One day, as the cobbler was stitching some torn and broken chapels, a car stopped at the roadside in front of him. Thinking it to be a police car, the cobbler hurriedly collected his things and prepared to run. He thought that policemen had come to chase him away. Swami stepped out of the car and told the cobbler not to be afraid. Instead, he made him sit in the car. The cobbler was too stunned to speak. The car sped on with Swami and the cobbler inside. Swami guided his driver straight to the cobbler's hut. The cobbler got out. The cobbler got out of the car and went inside. He asked his wife to spread a mattress and rushed out to welcome Swami. Swami sat on the mattress. The cobbler realized that there was nothing in his house which he could offer to the Lord. He was in a great fix and began squeezing his hands in agony. Looking at his plight, Swami said not to worry. He told the cobbler that he had come to give and not to take anything from anybody except love. With a wave of his hand, Swami created sweets and fruits and distributed them to all the people who were present. He then created the holy vibhuti and applied it on the cobbler's forehead. Before leaving, Swami said, "I shall take leave of you now. Do not worry, I am always with you." Before the cobbler could say anything, Swami got into his car and left. Swami transformed the hut of the simple cobbler into a temple. One day, when Swami had gone to Tiruchirappalli, some people began spreading false allegations against him. That evening, when Swami was addressing the gathering, he called a beggar boy who was dumb and who was mute and known to all. Swami asked the boy to come on stage and in front of the entire crowd asked him his name. The boy who was mute said loudly, "Venkata Narayana." The people who had spread the false rumors about Swami bowed their heads in shame. Swami's mahimas are innumerable. Once in Tiruvannamalai, Swami created some medicine for Swami Amritananda and cured him of his chronic ailment. At another time, the son of Dr. Bhagavantam was opened upon by Swami himself. He created an instrument as well, which is still with Dr. Bhagavantam. Swami performed surgery on him. Dr. Shankar is another ardent devotee of Swami. Many times, Swami has entered Dr. Shankar's physical frame and performed a very complicated operations successfully. Swami Karunyananda had an ashram in Andhra Pradesh. He had put up some photo of Swami in the ashram's hospital. Once a pregnant lady came to the ashram seeking help. The Swamiji put her up in the ashram's hospital. One night, leaving the pregnant lady alone, the midwives went out to watch a late night movie. The same night, the poor lady began experiencing severe labor pains. Seeing her suffering and helpless, Swami came down from the photo, hung on the wall. He treated the lady and helped her deliver the baby safely. Mother Sai even cleansed the newborn baby and gently placed it beside the mother to feed it. When the midwives returned, they were surprised to see that someone else had already done the work. When they
questioned the lady. She pointed at Swami's photo and told them that the Sadhu Mata has come and helped her. She did not know that the Sadhu Mata was Lord Narayana himself. Sri Sathya Narayana has taken birth again and is protecting all of us. He will always protect whoever trusts him. It is our very great good fortune earned through many births that we are having the Lord's darshan, sparshan and sambhashan and his very presence in this Goshala as we witnessed on Sunday. Swami's very nature is love. He protects those who follow the path of bhakti and dharma. He is called by some as Ishvara, some as Mahavishnu, some as Father, and some as Allah. Likewise, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba takes on various forms of God, as all forms are His and all names are His. He bestows upon His devotees His grace and grants their wishes. He says that the human values are our very life. Without Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa, education is empty. Without Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa, charity and donations have no value. Without Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa, the so-called sacred activities and rituals are pointless. It is the Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. They are the four pillars of Sanatana Dharma. The Sanatana Bhagavan reminds us always to thank God and not to put it off. God's name alone can secure redemption. Whosoever performs this Sri Sathya Sai Narayana Puja with true love and devotion, the Lord Sri Sathya Sai, Satya Narayana will bestow upon them a happy and peaceful life and will take away their worries and sorrows. Thus ends the Sri Sathya Sai, Satya Narayana Katha with all auspiciousness. Bow to Sai, peace be to all. सत्यनारायण साई सत्यनारायण स्वामिने नमः। पंचमाध्यायानन्तरं समस्तोपचारान् समर्पयामि। यथा भागशः नारिकेळ खण्डद्वयं निवेदयामि। पूगीफल ताम्बूलं समर्पयामि। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्योसानेते एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति। पंचमाध्यायानन्तरं नीराजनं सन्दर्शयामि। आचमनीयं समर्पयामि। परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। रक्षां धारयामि। ओम हरा ಛತ್ರಚಾಮದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಡು. ಪೂಜಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಛತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಚಾಮರಾಭ್ಯಾಂ ಬೀಜಾಮಿ ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ಆಂದೋಳಿಕಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಶ್ವಾರೋಹಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗಜಾರೋಹಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಮಸ್ತರಾಜೋಪಚಾರ ದೈವೋಪಚಾರ ಭಕ್ತ್ಯೋಪಚಾರ ಶಕ್ತ್ಯೋಪಚಾರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಕ್ಷನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಲ್ಲಿರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಜ ನಾಮೋಕ್ತ್ಯ ತವ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಶೋ ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣದಾಯಾಂತೋ ಸದ್ಯೋವಂತೆ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ ಅನೇನ ಆಚರಿತ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತ ಪೂಜಾರಾಧನೇನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಭವಂತು. ಮಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಸ್ವರವರ್ಣ ಧ್ಯಾನ ನಿಯಮ ನ್ಯೂನಾತೃತ್ಯ ಲೋಪದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ನಾಮತ್ರಪಠನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ಭಾಪಕೃತೈ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सत्यनारायणायेति समर्पयामि। साई नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत्। अयं मेस्तु
అక్కడ పూల ప్రసాదం తీసుకోండి, కాదు కొట్టుకోండి. అయం మే స్థో భగవాన్, అయం మే భగవత్తరః, అయం మే విశ్వభేషజోయం శివాభివర్షిణః ఇది ప్రసాదం స్వీకృత్య శిరసా గృహ్ణామి. పశుభ్యోదీంద్రం తదీంద్రం యజ Please take some ఆర్చత akshatas that you put in on Bhagwan ఇంద్ర ఇవ యశస్వీ and put భవతి yourselves పశ్యతి on పుత్రం your heads. పశ్యతి పౌత్రం ప్రజయా పశుభిర్మిథునైర్జాయతే యస్యైవం విదుషోऽగ్నిహోత్రం జుహ్వతి యౌచైన దేవం వేద. శ్రీ సాయి సత్యనారాయణ స్వామి పరిపూర్ణానుగ్రహ ప్రసాద ఫల సిద్ధిరస్తు. సత్యాస్సంతు యజమానస్య కామాః. Sathya Narayana Govinda Madhava, Sai Narayana Govinda Keshava. Sathya Narayana Govinda Madhava, Sai Narayana Govinda Keshava. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Narayana Govinda Madhava, Sai Narayana Govinda Keshava. Narayana Govinda Madhava, Narayana Govinda Keshava. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare. Narayana Govinda Madhava, Sai Narayana Govinda Keshava. Sarvadharma Swarupa Sai, Sarvadharma Swarupa Sai, Shirdi ke avatara, Avatara, Bhakti ke avatara, Sai Rama, Ram, Mere Sai, Mere Rama, Mere Sai. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. हिंदू मुस्लिम ईसाई आते हैं
द्वारे साई आए हैं तेरे द्वारे हिंदू मुस्लिम साई आते तेरे द्वारे हिंदू मुस्लिम साई आते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे साई राम 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 सर्वधर्म स्वरूप साई शिरडी के अवतार मेरे बाबा मेरे साई साई राम साई राम साई राम साई राम हिंदू मुस्लिम साई आते हैं तेरे द्वारे मिलते हैं तेरे द्वारे साई राम साई राम साई राम साई 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 धर्म स्वरूप साई कामयता समात्मना पध्येयेति आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै दशमगुं होत प्रत्यशृणोत स दशहोतो भवत दशहोतो हवै नामैजः तं वा एतं दशहोतगुं सन्तो दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै तमगुं होत प्रत्यशृणोत स सप्तहोतो भवत सप्तहोतो हवै नामैषः तं वा एतगुं सप्तहोतगुं सन्तो सप्तहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै षड्ढगुं होत प्रत्यशृणोत स षड्ढोतो भवत षड्ढोतो हवै नामैषः तं वा एतगुं षड्ढोतगुं सन्तो षड्ढोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै पंचम
स पञ्चहोतो भवत पञ्चहोतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चहोतगुं सन्तो पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै चतुर्थगोहोत प्रत्यशृणोत स चतुर्होतो भवत चतुर्होतो हवैनामैषः तं वा एतं चतुर्होतगुं सन्तो चतुर्होतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः तमब्रवीत तं वै मेनेदिष्टगोहोत प्रत्यश्रौषेः त्वयैनानाख्यातारयिते तस्मान्नो हैनागश्चतुर्होतार इत्याचक्षते तस्माश्रुश्रोषपुत्राणागुं हृद्यतमः नेदिष्ठो हृद्यतमः नेदिष्ठो ब्रह्मणो भवति य एवं वेद हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्योसानेति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति सांग्रहण्येष्ट्यायते इमान् जनतागुं संगृह्णानेति द्वादशारत्नेरशना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदश्वमेधः समृद्ध्यै सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हविगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुंसवाः त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति ऐन्द्राग्नमुपसादितं सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यो जुहोति योऽग्निहोत्रं जुहोति यथा खलु वैधेनन्ते ते तर्पयति एवमग्निहोत्रं यजमानं तर्पयति तृप्यति प्रजया पशुभिः प्रसुवर्गं लोकं जानाति पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति यौ चैन देवं वेद सोम विराजमेव तैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे एकादश दशत आलभ्यन्ते एकादशाक्षरा त्रैष्टुभा पशवः पशूनेवावरुन्धे वैश्वदेवो वा अश्वः नानादेवत्या पशवो भवन्ति अश्वस्य सर्वत्वाय नानारूपा भवन्ति तस्मां नानारूपा पशवः बहुरूपा भवन्ति तस्मात् बहुरूपा पशवः समृद्ध्यै ॐ तं काले काल आगते यजते ब्रह्मवादिनो वदन्ति सत्त्वाध्वर्यस्यात् यो यतो यज्ञं प्रयुङ्क्ते तदेनं प्रतिष्ठापयतीति वासाद्वा अध्वर्युर्यज्ञं प्रयुङ्क्ते देवा गातुविदो गातुं विद्वा गातुमितेत्याह यत एव यज्ञं प्रयुङ्क्ते तदेनं प्रतिष्ठापयति प्रतिष्ठति प्रजया पशुभिर्यजमानः सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः। एकार्थ द्वितीयार्थ तृतीयार्थ तुरीयार्थ पंचार्थी
रथार्थदीपं दर्शयामि, कुम्भार्थदीपं दर्शयामि, नागार्थदीपं दर्शयामि, चक्रार्थदीपं दर्शयामि, वृषभार्थदीपं दर्शयामि, आचमनं समर्पयामि, परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मृतकं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। राजाधिराजाय प्रसक्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। यो वैतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः। श्री साई सत्यनारायण स्वामिने नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, छत्रं समर्पयामि, चामराभ्यां बीजयामि, गीतं श्रावयामि, आंदोलिकान् समर्पयामि, अश्वारोहण गजारोहण सदारोहण समस्तराजोपचार दैवोपचार भक्तोपचार शक्तोपचार षोडशोपचार पूजा समर्पयामि। ओम ओम यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्वं तमेव राजाधिपतिर्बभूव। संकीर्णनागाश्वपतिर्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः। ओम स्वस्ति। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्यैषव्यः शूरो महारथो जायता। दोग्ध्रिधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तप्रन्धिर्योसा जिष्णोरथेष्टा। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षद फलिन्यो नवोषधे पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। ओम स्वस्ति। सुश्लोका सुमंगला सत्यराजा इत्याह। ओम स्वस्ति। प्रत्यगानंदं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकदा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासकः वैकुंठ भुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुंडरीकं विज्ञानगणं तस्मात् तदिदावन्मात्रं। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकन्नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मो एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति माद्यन्दिनमादित्याभिमुखो दीयान पञ्चपातोपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद। ओम स्वस्ति। ओम आनंदो ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेधो मेधया स्पृणोद् अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरिमिश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय आवहं देवि तन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुंसिमभगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा
यशोजने सा निस्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसा निस्वाहा तन्त्वा भग प्रविशा निस्वाहा समाभग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निबगाहं त्वयि मृजे स्वाहा यथा पप्रवदायुं यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायुं च सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमापाहि प्रमापद्यस्व हरिः ओं स्वस्ति विष्णुस्तदावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम स्वस्ति लक्ष्मीर्धारधरा धरा धर धरा धाराधर श्रीधरा लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षम् अङ्घ्रिद्वयं निगमशाखिशिखा प्रबालम् हैरम्बमम्बरहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतता रघुधरं धरन्दः ॐ स्वस्ति गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा जलजनयन विधि नमोचिरहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा जलजनयन विधि नमोचिहरण मुख विबुध विनुत पद पद्मा विबुध विनुत पद पद्मा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा भुजगशयन भव मदन जनक मम चरण मरण भयहारी भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा शङ्खचक्रधर दुष्ट दैत्यहर सर्वलोक शरणा शङ्खचक्रधर दुष्ट दैत्यहर सर्वलोक शरणा सर्वलोक शरणा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा अगणित गुणगण अशरण शरण विचलित सुररिपुजाला अगणित गुणगण अशरण शरण विदलित सुररिपुजाला विदलित सुररिपुजाला मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् पाहि भारती तीर्थम् मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा मम तापमपाकुरु देवा मम पापमपाकुरु देवा
गरुड गमन तव चरण कमलमि मनसि लसतु मम नित्यम् गरुड गमन तव चरण कमलमि मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरुदेवा मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव मम तापमपाकुरुदेव मम पापमपाकुरुदेव ओम स्वस्ति स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सबला सन्तति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका श्री सत्य साईश्वराय नमः साई सत्यनारायण स्वामिने नमः नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सव अनेक महोत्सवानां दिने दिने अभिवृद्धि प्रदो भूयास्ताविति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु अस्मिन् दिने प्रदोष काले आचरिता साई सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाराधनेन साई सत्यनारायण स्वामी सुप्रेत सुप्रसन्नो वरप्रदो भूत्वा सर्वेषां भक्त महाजनानाम् इष्टकाम्यार्थ सिद्धि द्वारा मनोवांछा फल सिद्धिरस्तुते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सर्वेषां भक्तजनानाम् इष्टकाम्यार्थ सिद्धि प्रदो भूयास्ताविति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु सत्या एता आशिषः सन्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महीजाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवीं सस्यशालिनीं देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ओम जय हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना जगदीश हरे शिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते
शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की साई माता की समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की गो माता की Let's enjoy the sound of the grace of the Lord. The first day of the yajna, it was so fearful to drive away all the negativity associated with this place and totally shatter it off so that nothing will interfere with conductance of the yajna. Right when we finish the aartis, that's divine grace. Brothers and sisters, I don't know about all of you, but if any one of us have any delusion that Swami is not present, please go see a doctor. Is there any question? Not imaginatively, but totally in awareness and presence. As we celebrate the Guru Purnima in our utmost gratitude and in surrender to Bhagwan, Swami's thought for the day as written in